तो स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं यूएफओज, यूएपीज और एलियंस के बारे में। क्या अमेरिका एलियन टेक्नोलॉजी हमसे छुपाती आ रही है? क्या ये राज हमें अभी तक इसलिए पता नहीं चला क्योंकि अमेरिका इसे अब तक हमसे छुपाती आ रही है? क्या अमेरिका के गवर्नमेंट ने इसे टॉप सीक्रेट घोषित करके रखा है ताकि जनरल पब्लिक को इसकी भनक तक ना लगे? तो गाइस, रिसेंटली यूएस इंटेलिजेंस के कुछ ऐसे खुलासे सामने आए हैं कि सब के सब दंग रह गए। तो गाइस, मैं आपका होस्ट अभिषेक और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं ऐसे 3 टॉप यूएस ऑफिशियल से जिनका दावा है कि उन्होंने अभी तक बहुत सारे यूएफओ साइट किए हैं, बहुत सारे यूएपीस देखे हैं। इनमें से फॉर्मर यूएस नेवी पायलट रायन ग्रेव्स, दूसरे नंबर पर फॉर्मर यूएस नेवी कमांडर डेविड फ्रेवर और आखिर में फॉर्मर यूएस इंटेलिजेंस ऑफिसर डेविड बुश भी है। तो आज से 6 दिन पहले यूएस कांग्रेस के सामने कुछ ऐसे खुलासे सामने आए हैं कि सब के सब दंग रह गए। हियरिंग में दोनों रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक लॉ मेकर्स भी साथ में थे, तो बहुत ही सीरियस मुद्दा था। तो गाइज, मैं बता दूं, इस हियरिंग में बहुत देर तक अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमेनन, जिसे हम यूएपीज कहते हैं, यूएफओस और एलियंस के बारे में चर्चा हुआ। उनके साथ होने वाले मुठभेड़ के बारे में बात किया गया और ये नेशनल सिक्योरिटी को कैसे मुसीबत में डाल सकते हैं और हमारे लिए किस तरह खतरनाक हो सकते हैं, इसके बारे में भी चर्चा हुआ। और कैसे यूएस गवर्नमेंट इन महत्वपूर्ण मुद्दों को पूरी दुनिया से छुपाती आ रही है, इसके बारे में भी चर्चा हुआ। तो शुरुआत करते हैं रायन ग्रेव्स से, एक 37 साल उम्र के फॉर्मर यूएस नेवी लेफ्टिनेंट जो कि पेंटागन के अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमेनन इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हुए हैं, यूएफओ साइटिंग्स कह सकते हैं। इन्होंने अपने ट्रेनिंग सेशंस में कई यूएफओ साइट किए हैं, ज्यादातर ईस्ट कोस्ट ऑफ यूएस की तरफ, और बाद में ये सब डॉक्यूमेंट भी किया गया है और इसकी ऑथेंटिसिटी खुद पेंटागन ने टेस्ट किया है। तो आइए सुनते हैं रायन ग्रेव्स का क्या कहना है इस मुद्दे पे। My name is Ryan Fobbs Graves, and I'm a former F-18 pilot with a decade of service in the U.S. Navy, including 2 deployments in Operation Enduring Freedom and Operation Inherent Resolve. I have experienced advanced UAP firsthand, and I'm here to voice the concerns of more than 30 commercial aircrew and military veterans who have confided their similar encounters with me. Today, I would like to highlight 3 critical issues that demand our action. As we convene here, UAP are in our airspace, but they are grossly underreported. These sightings are not rare or isolated, they are routine. Military aircrew and commercial pilots, trained observers whose lives depend on accurate identification, are frequently witnessing these phenomena. The stigma attached to UAP is real and powerful and challenges national security. It silences commercial pilots who fear professional repercussions, discourages witnesses, and is only compounded by recent government claims questioning the credibility of eyewitness testimony. Parts of our government are aware of more about UAP than they let on, but excessive classification practices keep crucial information hidden. Since 2021, all UAP videos are classified as secret or above. This level of secrecy not only impedes our understanding, but fuels speculation and mistrust. अगले आते हैं डेविड फेवर, फॉर्मर यूएस नेवी कमांडर। एक ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में बात करते हैं जो कि उन्होंने नेवी में सर्च करते हुए ऑब्जर्व किया था, सैन डिएगो कोस्ट की तरफ। उनके मुताबिक उस दिन वेदर बहुत क्लियर था, कोई बारिश नहीं, कोई बादल नहीं, पूरा क्लियर। और उन्होंने एक मिस्टीरियस सा टिक टैक शेप ऑब्जेक्ट देखा अपने राइट साइड पे, और उनके साथ उनके चारों साथी F-18 FS में सवार पायलट्स और विजर्ट के साथ सबने ये फेनोमेनन देखा नीले समुद्र में। एक व्हाइट कलर का ऑब्जेक्ट टिक टैक शेप का जो कि अजीबो गरीब तरीके से मूव कर रहा था पानी में। तो आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है इस मुद्दे पे। Looked around, we noticed that we saw some white water off our right side. It's important to note that the weather on this day was as close to perfect as you could ask for off the coast of San Diego. Clear skies, light winds, calm seas, no white caps from waves. So the white water stood out in a large blue ocean. All 4 of us, because we were in F-18Fs, so we had pilots and Wizzo in the back seat, looked down and saw a white tic-tac object with a longitudinal axis pointing north-south and moving very abruptly over the water like a ping pong ball. There were no rotors, no rotor wash, or any sign of visible control surfaces like wings. As we started clockwise towards the object, my Wizzo and I decided to go down and take a closer look with the other aircraft staying in high cover to observe both us and the tic-tac. We proceeded around the circle about 90 degrees from the start of our descent, and the object suddenly shifted its longitudinal axis, aligned it with my aircraft, and began to climb. We continued down another 270 degrees, nose low, where the tic-tac, or we considered 270 degrees to where, and we went nose low to where the tic-tac would have been. Our altitude at this point was about 15,000 feet, and the tic-tac was about 12,000.
As we pulled nose onto the object, within about a half mile of it, it rapidly accelerated in front of us and disappeared. Our wingmen, roughly 8,000 feet above us, lost contact also. और आखिर में आते हैं डेविड चार्ल्स ब्रूश, जो कि फॉर्मर यूएस इंटेलिजेंस ऑफिशियल हैं, और उनके मुताबिक अमेरिका के पास एक नॉन ह्यूमन एयरक्राफ्ट है जिसे गवर्नमेंट ने अभी तक छुपाया है जनरल पब्लिक से। तो आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है इस मुद्दे पर। I'm happy to be here. This is an important issue and I'm grateful for your time. My name is David Charles Grush. I was an intelligence officer for 14 years, both in the U.S. Air Force, both active duty Air National Guard and Reserve at the rank of major, and most recently from 2021 to 2023, at the National Geospatial Intelligence Agency, NGA, at the GS-15 civilian level, which is the military equivalent of a full bird colonel. I was my agency's co-lead in unidentified anomalous phenomena and transmedium object analysis, as well as reporting to the UAP task force, UAPTF, and eventually, once it was established, the All-Domain Anomaly Resolution Office, ARROW. I became a whistleblower through a PPD-19 urgent concern filing in May 2022 with the Intelligence Community Inspector General. Following concerning reports from multiple esteemed and credentialed current and former military and intelligence community individuals that the U.S. government is operating with secrecy above congressional oversight with regards to UAPs. My testimony is based on information I've been given by individuals with a long-standing track record of legitimacy and service to this country, many of whom also have shared compelling evidence in the form of photography, official documentation, and classified oral testimony to myself and my various colleagues. I have taken every step I can to corroborate this evidence over a period of 4 years while I was with the UAP Task Force and do my due diligence on the individual sharing it. This is because of these steps, I believe strongly in the importance of bringing this information before you. I am driven by a commitment of both to truth and transparency, rooted in our inherent duty to uphold the United States Constitution and protect the American people. I'm asking Congress to hold our government to this standard and thoroughly investigate these claims. But as I stand here under oath now, I am speaking to the facts as I've been told them. In the U.S. Air Force, in my National Reconnaissance Office, NRO, reservist capacity, I was a member of the UAP Task Force from 2019 to 2021. I served at the NRO Operations Center on the Director's Briefing staff, which included the coordination of the Presidential Daily Brief and supporting variety of contingency operations, which I was the Reserve Intelligence Division Chief backup. In 2019, the UAP Task Force Director asked me to identify all special access programs and controlled access programs, also known as SAPs and CAPs, we needed to satisfy our congressionally mandated mission, and we were direct report at the time to the DepSecDef. At the time, due to my extensive executive level intelligence support duties, I was cleared to literally all relevant compartments and in a position of extreme trust, both in my military and civilian capacities. I was informed in the course of my official duties of a multi-decade UAP crash retrieval and reverse engineering program, to which I was denied access to those additional read-ons when I requested it. I made the decision, based on the data I collected, to report this information to my superiors and multiple inspectors general, and in effect becoming a whistleblower. As you know, I've suffered retaliation for my decision, but I am hopeful that my actions will ultimately lead to a positive outcome of increased transparency. Thank you, and I'm happy to answer your questions. तो गाइस, तीनों ही बहुत हाई रैंक के ऑफिसर है और ये बात बहुत ही अनलाइकली है कि तीनों ही ये फेम के लिए कर रहे हैं। तो हमें ये बात बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए और ये बात बहुत ही लेजिटिमेट
मुझे भी लग रहा है। हमें अभी तक ये पता है कि अमेरिका ने टोटल 12 इन्वेस्टिगेशन किए हैं यूएफओ के ऊपर। इनमें से प्रोजेक्ट ब्लू बुक, प्रोजेक्ट ग्रज, प्रोजेक्ट सर्कल, प्रोजेक्ट साइन भी आते हैं। पर बात ये है कि सब के सब या तो सस्पेंड कर दिए गए हैं या फिर उनका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। और इस दुनिया में दो टाइप के रिसर्चर्स है, एक जिन्हें लगता है कि इस ब्रह्मांड में हम अकेले हैं और दूसरे जिनको लगता है कि इस ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं, कोई और भी है और वो उनका पूरा लाइफ रिसर्च करने में लगा देते हैं। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि अमेरिका ही क्यों, दूसरे देश क्यों नहीं? एलियन दूसरे देश में क्यों नहीं पाए जाते? मतलब दिखते नहीं, साइटिंग्स क्यों नहीं होते? आर दे रेसिस्ट? और क्या जादू हमें मिलने आएगा कि नहीं, येट टू बी आंसर्ड। तो गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और गाइज सपोर्ट करते रहना। तो फिर से मिलते हैं, चलो बाय।